चलते Walaikum assalam. Shayan, we are doing paper 2 questions today, as we were doing paper 1 questions during our week classes. Today we are doing paper 2 questions, and I'm starting with June 05 paper 2. Today I have selected some older questions, and they might not be in your paper 2 book. तो अगर तुम्हारी पेपर 2 बुक में वो ना हो तो कोई मसला नहीं है, तुम ईयर नंबर नोट कर लो और मैं या तो ग्रुप पे डाल दूंगा या बस यहीं से देख लो। इतने पुराने क्वेश्चंस आमतौर पे लोग नहीं करते, लेकिन करने चाहिए। ओल्ड क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस, दोनों तरह के क्वेश्चन करने चाहिए। हाँ, लेकिन वो मतलब उसमें लेटेस्ट में आप अगर 2021 की बुक लोगे ना, थोड़ा वेट कर लेते, लेकिन 2021 की बुक है ना तो उसमें बिल्कुल लेटेस्ट है। ये तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये तो उस बुक में नहीं होगा। चलो लेट्स स्टार्ट ना। मेक एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसका हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है, मैंने नोट्स में भी लिखवाई थी, दिस इज 300 to 400। द डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सवाल पेपर में काफी लोगों को मुश्किल लगा था कि एयर की डेंसिटी कैसे आएगी। ऐसे सवाल को सोचते कैसे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, so you can't actually guess the density of a gas, but you always have to remember that density of water, which is a constant, density of water is 1 gram per cm cube। तो जो water की density है ना, you can use it as a reference। अगर water की density 1 है तो air की density उसके आसपास होगी। हाँ 330, देखो ये doesn't matter, रेंज है ना, मैंने ऊपर रेंज लिखी है 300 से 400। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो रेंज है, तो वो 330 भी चलेगी, 340 भी चल जाएगी, तो वो इतना मसला नहीं होता। जैसे मैंने क्लास में समझाया था
कि एस्टिमेशन में एग्जामिनर के पास एक रेंज होती है, तुम्हें एक आंसर लिखना होता है, तुम तो रेंज नहीं लिख सकते, लेकिन उसके पास एक अच्छी बड़ी रेंज होती है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम/cm³ है, तो इसी के आसपास तुम एयर की डेंसिटी कर दो। सपोज तुम कह देते हो 0.9, दैट विल बी फाइन। द मास ऑफ अ प्रोट्रैक्टर, यहां तुम लोग मुझे हेल्प करो, तुम लोग थोड़ा गेस लगाओ कि प्रोट्रैक्टर का मास कितना होगा। हाँ, 10 ग्राम। ठीक है, अगर आप माइक यूज करते हैं तो बेशक कर लें, लेकिन फिर बात करने के बाद आप बंद कर दीजिएगा ताकि वो रिवर्स साउंड ना आए। तो 15 ग्राम, 15 ग्राम, दैट इज फाइन ना। सो आई टेक 10 ग्राम। 10 ग्राम लुक्स गुड टू मी। 10 ग्राम सही लग रहा है, और 10 ग्राम के ऊपर हम इसको कंसेसिस कर लेते हैं। वैसे तो 15 ग्राम भी सही है। इवन जरा जरा मोटी सी प्रोट्रैक्टर हो तो वो 20 ग्राम तक भी जा सकती है। अब ये वो फेमस क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था। लेट्स से कितने लोगों को याद है। हेड को सपोज कर लो 4/3 πr³। अब मैंने बताया था कि ये सवाल पेपर में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर दिया था इसने, बिकॉज normally it is not easy to estimate such a thing. So what we assume that our head is a sphere. Now how we find the radius? We take that, we take a meter rule, and we take a ruler, और हम ruler से we take the distance from the nose to the head, and this will give us the radius. We will put the radius, and after putting the radius we can get the answer 2000 to 9000। ये पूरा, अभी रेंज मत दो ना, रेंज तो मैं दे सकता हूँ, ये एग्जामिनर देगा ना। आप तो एक नंबर बताओ ना, 2000 से 9000 तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। आपको एक नंबर 3500। आप लोग अपना अपना जरा, अब तो घर पे हैं सब लोग, तो जरा ऐसा करें कि मीटर रूल छोटा वाला, हाफ मीटर रूल लें, अपने नोज से हेड तक का रेडियस निकालें, फॉर्मूला में डालें, और मुझे आंसर जरा शेयर कराएं। एक बच्चे ने आंसर दिया है 3500। नाउ अनदर आंसर आई गॉट इज 3000। दैट्स गुड। एक दो आंसर और आप लोग कंट्रीब्यूट कर दो। I need some more contributions, and I got just 2 answers by now. So we need contribution. We have a test on Monday also. So we need some support. The test we are putting on Monday is a mixed test, paper 1, paper 2, both. I have posted already one more guideline today कि क्या क्या चीजें उसमें कर लो, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ 2 आंसर मिले हैं। अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्लासेस का फायदा होगा। मार्क्स छोड़ो आदिल, वो तो 50 मिनट का टेस्ट है यार, तो 50 मिनट में कितना टेस्ट बन जाएगा? 25 नंबर का बन जाएगा, 30 का बन जाएगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, ड्यूरेशन 50 मिनट है, 45 टू 50 मिनट है। चलो और लोग भी कंट्रीब्यूट करो यार जल्दी से। वी कांट स्टे ऑन वन क्वेश्चन फॉर एवर। 1.4 Adil is fine. The density of air 1.4 is fine because water की density से बाज़-औक़ात air की density ज़्यादा होती है because air contains moisture. So as air contains moisture, the density of air can be greater than water. I have not received any more answers. For the head of an adult person, take a ruler and measure the radius from your head, nose to head radius लो,
उसको फॉर्मूला में डालो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। ओके, आई गॉट वन मोर आंसर। गुड शायन, शाबाश, 3800। गुड, वेरी गुड। देखो कंट्रीब्यूशन जो है ना, यू मस्ट हैव अ कॉपी, पेंसिल एंड जो नए वाले क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, 4000 भी अच्छा आंसर है हमाद। गुड। देखो जो नए क्वेश्चंस मैं करवाऊं उसको तो तुम टॉपिकल बुक पर ही करो। मेरा होमवर्क लेने का तरीका ये है कि मैं होमवर्क को मार्क करता हूँ एंड आई एक्चुअली थिंक कि वो होमवर्क अगर तुम लोग बुक पे कर लोगे तो मैं तुमसे बुक से स्कैन करवा कर, वो जो आजकल मोबाइल पे डिवाइस एप्स होती हैं, तो मैं तुमसे गूगल क्लासरूम में अपलोड करा लूंगा और फिर वो सब कुछ डिजिटल होगा। बुक्स लाने का मसला तब होगा जब मैं कहूंगा, तो उसमें सारा काम एक जगह हो जाएगा। चलो, नाउ आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, दिस इज June 06। आई एम पुटिंग माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। This is June 06, paper 2. Today I'm doing a bit older questions, and this is a pattern of all good students that they should look at some older questions, some new questions. पेपर 2 करो जब तुम, तो पुराने क्वेश्चंस पहले करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस जो है ना वो जरा आसान है। नए क्वेश्चन, जितने नए क्वेश्चन पे आते जाओगे वो तुम्हें मुश्किल लगेंगे। नाउ आई हैव SI बेस यूनिट। सो मैंने आपको फॉर्मूलाज की एक लिस्ट भेजी है। मुझे एक बच्चे ने पूछा कि आपने ओ लेवल के सारे फॉर्मूलाज क्यों भेजे, तो वो उसकी वजह ये है कि असल में इस चैप्टर में फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप बेस यूनिट तो नहीं निकाल सकते ना। तो इसमें जो रफीक कह रहे हैं, रफीक गुड 4GMS, ये अच्छा लिखा है रफीक ने, जो क्योंकि वो जो न्यूटन है वो डिराइव यूनिट है। अच्छा, मास की जगह लिख देता हूँ kg, एक्सेलरेशन की जगह लिख देता हूं ms-2। ये न्यूटन है और न्यूटन इज इक्वल टू kg ms-2। तो दिस इज द राइट आंसर। Newton cannot be the answer because Newton is a derived unit. The word says SI base unit. Now let's move forward. A spherical ball of radius r experiences a resistive force due to the air as it moves through the air at a speed v. The resistive force F is given by this expression. F is equal to CRV. He says find the base unit of the constant. What I have taught in the class कि जिस चीज का तुम्हें यूनिट निकालना हो उसको तुम सब्जेक्ट बना लो. So you need to find the constant for C. So I write the equation F is equal to CRV and I make C the subject, F upon RV. देखो उसने तुमसे ऑलरेडी फोर्स का यूनिट ऊपर बनवा लिया है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉपी इट हियर. यू कैन राइट kg ms-2 and denominator में you can write meter into meter per second. So you can further go, you can say kg ms-2 upon meter square s-1. Then you draw a partition. Drawing a partition is actually should be our habit from O levels, and it's always impressive that you try to go for a clean working, especially in the start of your paper 2. Now can you guide me that meter और meter square क्या ये माइनस हो जाएंगे? मैं लिख देता हूं kg. मुझे बताओ मीटर पे कितना यूनिट बचेगा? ऊपर 1 है, नीचे 2 है, सो 1 - 2 कर देता हूं, -1. And what about this second? हाँ, good Ali, शाबाश, meter -1. And what about second? It is -2 + 1. सही है. some people have contributed perfectly and I always believe कि जितना आप contribute करोगे उतना फायदा होगा. इसका जो remaining part है, देखो ये ना, this goes for our second chapter actually, kinematics, so I'm leave this out.
This topic we haven't done yet. This is called calibration. R is the radius. R is the radius and radius का unit होता है मीटर. Now I'm starting this question and this is June 08. Make reasonable estimates of the following quantities: the frequency of an audible sound wave. That's a very famous, Adil, right? 220 hertz to 20 kilohertz. This was very famous in O level. 20,000 kilohertz. It's 20 kilohertz. This was famous in O levels. Now, wavelength of ultraviolet. You can look at the notes. I have given the table also. So you can see that कितना होगा. जो विबगायर होता है, जो विजिबल लाइट होती है, उसका होता है 400 to 700 नैनोमीटर. दिस इज विजिबल लाइट. उसकी लेफ्ट साइड पर होता है यूवी. तो यूवी का वेवलेंथ 400 से कम करना पड़ेगा. लेस देन 400 नैनोमीटर इज राइट. आप लोग चाहो तो देख के बता दो. आई हैव नो ऑब्जेक्शन. आई हैव posted a table on the group and you can look at the table and tell me what is the wavelength of ultraviolet radiation. Less than 400 सही है. Okay. चलो, I take 350 nanometer. Now move forward. I take the mass of a plastic 30 centimeter rule, 10 gram. Okay, good. 10 gram looks fine. So I take 10 gram, 20 gram is 30 gram is also fine, but not more than 30. Density of air at atmospheric pressure. This is the same question as we did a bit ago. इसके लिए वही 1.2, 1.4 कोई भी नंबर ले लो जो 1 के अराउंड हो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है. वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 होती है. तो ये जो एयर है इसकी डेंसिटी 1 के अराउंड चलती है. This is a topic of instrument. We have not done in detail any instrument. O level का तो चलेगा, but A level के हमने instruments अभी नहीं किए. Now let's try this question. Question number 8 in this file. We can try first part, A part and B part. This is November 02. This is a very old question. हाँ, तो इसकी definition O level में क्या थी? Density is the mass. Density is defined as mass per unit volume. This was in our O level, right? State the base unit in which density is measured. How we tackle this question? Because density is equal to mass upon volume. मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब. सो इट्स केजी पर मीटर क्यूब. नाउ द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, वेयर रो इज द प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ डेंसिटी एंड इट्स लैम्डा इज अ कांस्टेंट. ये जो सिंबल है ये वाला इस सिंबल को हम पढ़ते थे ओ लेवल में गैमा. और ये वाला जो सिंबल है इसको पढ़ते थे ROH, रो. Now he says show that rho has the base unit this. अच्छा, ये रो नहीं है, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, आई एम सॉरी. This is not rho, this is P. This symbol is not rho. ये थोड़ा सा छोटा बना हुआ तो I didn't see that. अच्छा, ये रो ही है. सॉरी. ये जो पॉइंट है ये वाला,
I'm sorry, ये वाला जो है ये P है और ये वाला रो ही है, और इसको मैं लिख देता हूं रो डेंसिटी. नाउ स्टार्ट दिस पार्ट. देखो 8B तो अभी शुरू ही नहीं किया शायद, अभी तो शुरू कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने सिंबल्स देखे. आई हैवंट डन द क्वेश्चन 8B. तो अभी वापस किया, अभी मतलब किया ही नहीं ना, शुरू नहीं किया. तो अब आप शुरू करो मेरे साथ सब लोग. देखो, गिवन दैट रो हैज द सॉरी प्रेशर हैज द बेस यूनिट दिस वन, शो दैट द कांस्टेंट गैमा हैज नो यूनिट. तो गैमा को सब्जेक्ट बनाने में हेल्प करो. ये बताओ कि गैमा को सब्जेक्ट बनाऊं कैसे. V and gamma rho upon P. This is the formula. Now let me know how I can. This is a symbolic similarity a lot in the printing. I तो think नहीं, ऊपर P है और नीचे वो है. हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल ऊपर P है और नीचे रो है. सर अपोजिट साइड पे हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा. Very good. So I take V square as he says, and it will turn into, I have a square function now, and then I write gamma into P upon rho. Now I need to make gamma the subject. So it's gamma is equal to rho V square upon P. Then I take partition. Now अब डेंसिटी का यूनिट ऊपर बन गया था kg मीटर क्यूब. सो गैमा लिख दो kg m -3. Velocity is meter per second with a whole square. प्रेशर का इसने यूनिट खुद दिया हुआ है kg m-1 s-2. चलो अब सब लोग खुद सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर शेयर करवाओ, बिकॉज इट अपीयर्स टू मी कि kg तो कैंसिल हो रहा है. और ऊपर जो है मीटर क्यूब माइनस मीटर स्क्वायर s-2 अपॉन m-1 s-2. आई हैव डन टिल हियर. यहां से आगे मुझे आप लोग हेल्प करो. सर s-2 और s-2 कैंसिल हो जाएगा, m-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और m-3 और m-3 दोनों कट जाएंगे. Good contribution, as you say that m-3 plus 2 will become m-1 upon m-1. तो ऐसा ही होना भी चाहिए कि सब कटे. So we can say that gamma has no unit. No, you shouldn't say 0, you should say 1. 0 नहीं कहो, 0 पावर में आ रहा है, ठीक है, लेकिन 0 का मतलब तो फिर एक फर्क आ जाएगा. इट्स नॉट 0, you should say that it's coming as 1. Now I move to this question, and it's November 05. This is my next question. It is November 2005. Paper is 2. Now you can see that that these papers are much easier than the new papers. Older papers give you confidence, they give you a good base. अगर आप पुराने पेपर करोगे तो आपकी बड़ी अच्छी बेस बनती है, बिकॉज इसमें सवाल जरा आसान थे.
जैसे जैसे लोगों की मेहनत बढ़ती है, द एग्जामिनर्स ऑल्सो गेट clever and they give relatively harder questions. Now define pressure. Can anyone define pressure for me? Good. Pressure is force per unit area. Correct. State the unit of pressure in base unit. प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. न्यूटन की जगह आएगा केजी एमएस -2 अपॉन मीटर स्क्वायर. द मीटर स्क्वायर को जब ऊपर लाओगे तो ये हो जाएगा m-1 s-2. This is a working which we have done many times. Yes, good. And you should remember it now by heart. The pressure P at a depth h in an incompressible fluid of density rho is given by this, where g is the acceleration of free fall. Use base units to check the homogeneity of this equation. Homogeneity means that it should be consistent with the derived unit of pressure. So आप फॉर्मूला लिख दो, P is equal to rho GH. रो की जगह आएगा kg m-3, g की जगह आएगा ms-2 और हाइट की जगह आएगा मीटर. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो kg m-3 है, m1 है, m1 है, तो m-1 हो जाएगा and then it is s-2. Vectors are not coming in this test, तो इसलिए I'm not doing vector today because I'm trying कि ऐसा हो जाए कि जो हमारा टेस्ट है उसमें चीजें आपको समझ आ जाएं and we can get good response in our first test. ऐसे तो अभी अनसर्टेनिटी भी हमने कर ली है तकरीबन, but I'm not touching that. Now we come here on this question. This is 13 of this sheet and it is November 08. This is November 08 paper 2. Now this is our next question to start. First read the question. The current in a wire is I. Charge Q passes one point in the wire in time t. State the relation between I, Q and T. So can you help me? That's why I had posted the formulas of O levels, which you can remember them, because अभी obviously ज़ाहिर है कि ये फॉर्मूला AS में भी है, but वो तो आगे आएगा ना. तो O level के सारे फॉर्मूला रट लो तो तुम्हें इस चैप्टर में बहुत एडवांटेज होगा. What is the relation between I, Q and T? सही है. Then he asks, then examiner is asking, which of these quantities I, Q and T are base quantities? Now can anyone tell me? I, current. Good. क्योंकि SI unit में current is a base unit. सही. Good. The current in the wire is due to electrons, each with charge Q, that move with the speed V along the wire. There are N of these electrons per unit volume. फुरकान आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो,
स्क्रीन पर, तो एम्पेयर इज फाइन। आप क्वेश्चन पूछ लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो चैट पे पूछ ले, और अगर चैट पे ना मैं देख पाऊं तो आप मुझे माइक खोल के क्वेश्चन पूछ लें, बट वापस फिर बंद कर दें। कहता है स्टेट द यूनिट्स ऑफ आई एन एस क्यू एंड वी। आई का यूनिट तो हमने ऊपर से बना सकते हैं, अगर हमें करंट के बारे में पता है कि करंट जो है, करंट अगर हमें पता है कि करंट होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो ये हो गया एम्पियर पर सेकेंड। सो आई कैन राइट ए एस माइनस वन। व्हाट अबाउट एन? एन में पेपर में लोगों से गलती हुई थी, पीपल डिडंट रीड दिस होल सेंटेंस, ये वाला। n of these electrons per unit volume. सो अब ये बताओ n की यूनिट क्या लिखूं? व्हाट यू कॉल पर, ऊपर तो खाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि इट विल बी मीटर माइनस थ्री। सो मैं यहां लिख रहा हूं मीटर माइनस थ्री। हाउ दिस इज मीटर माइनस थ्री? because the statement says Sir, I can't electrons hear per you. unit volume. So volume is in the denominator and you have to bring it up. Now what is this S? S is the area. Examiner says S is the area, so it's meter square. What about Q? Examiner says that Q is the charge. So charge का क्या करें? अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो Q इज इक्वल टू आई टी एंड यू राइट एम्पेयर इनटू सेकंड, तो चार्ज हो गया एम्पेयर इनटू सेकंड। यस, गुड। V is the velocity. Velocity is all time known that it's meter per second. Now we move to the next part. The next part is a bit tricky and many people got stuck in the paper for this. NSQVK. NSQVK. Why people got stuck in this part? Because it's not simple. If you haven't done add mass, it's not very simple to make K the subject. So that will be a problem for many people. So I go for a simple working. I make V the subject because K तो पावर में है ना, तो उसको नीचे उतारने में बिला वजह में एफर्ट आएगा. So I have done this step. I have made V the subject. अब क्या करो, उसने आपसे सारे यूनिट ऊपर लिखवा लिए, सो आप उनको लिख दो यहाँ पर एम्पेयर इंटू एम्पेयर पर सेकेंड अपॉन मीटर क्यूब माइनस meter square, and then for charge it is ampere into second. Velocity is ms minus 1 power k. Now help me to solve this expression. सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि एम्पेयर और एम्पेयर कट जाएगा. We are left with s minus 1 upon, नीचे I have a meter minus 3 and meter square. तो what is minus 3 plus 2? हाँ, एम्पेयर कट हो गया, तो इट्स मीटर minus 1 and then it is second ms minus 1 whole power k. नाउ ये जो नीचे वाला s है इसको ऊपर लेकर आओ और मीटर को भी ऊपर कॉल कर लो.
ओके, इसको ऊपर ले आओ, तो ऊपर आके ये मीटर हो जाएगा S-1 और ऊपर आएगा तो ये वन कैसे आ रहा है? K is equal, ये तो पावर से कंपेयर होगा ना। आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल टू हेल्प मी आउट। Because there is some issue coming in the final step. एस तो कट हो जाएगा। कट वाली चीज नहीं समझ में आ रही। Anyone have to help us out? इसमें कोई चीज नहीं, स्क्रीन पे ना लिखें, स्क्रीन पे ना लिखें, आप अपनी वर्किंग अगर चाहें तो मुझे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे ना लिखें, आप मुझे वैसे बता दें, एस विल बी कट एट द एंड। अच्छा, बाकी लोग बताओ, इसमें कुछ मेरे पास एक एरर आ रहा है और उसमें सेकंड कट नहीं रहा। अब शायान कह रहे हैं कि उनके पास एस कैंसिल हो रहा है, आई की जगह एम्पियर एम्पियर पर सेकंड है। हाँ, इसमें गलती मिल रही है, इसमें गलती मिल गई है, मैंने करंट का यूनिट जो लिखा है उसमें कुछ गलती हो रही है। लेट मी करेक्ट माय मिस्टेक, आई हैव डन अ मिस्टेक हियर। करंट का यूनिट होता है कूलम पर सेकंड। देखो यहाँ पहले यहाँ करेक्शन करो। अदर पीपल शुड हैव टोल्ड मी दैट आई हैव डन अ मिस्टेक हियर। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग अ मिस्टेक देयर। सो फर्स्ट ऊपर आकर इसको करेक्ट कर लो, that it is coulomb per second and coulomb per second is ampere. So this is the point where I have done a mistake and I have to correct it, that there is no per second here. Current, so it means that after, तो जब आप इसको ऊपर लाओगे तो ये होगा ms-1 is equal to ms-1 पावर k। दोनों को कंपेयर करो तो 1 is equal to k, so k is equal to 1। वर्किंग चेक कर लो। हाँ, वो मैंने ऑलरेडी करेक्शन कर दी रफी। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, लेकिन मैंने गलती से एम्पेयर इनटू सेकंड कर दिया था। एनीवेज, द पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग आर एक्चुअली सपोर्टिंग अस, और इसमें एक गलती मुझसे हुई थी, मैंने उसको करेक्ट किया।
Let me find the next question. चलो ये कर लेते हैं. That looks to be a free hit, a free question if you have learned the memory. A unit is often, ये क्वेश्चन है कौन सा, ये है जून 2010. अच्छा ये थोड़ा नया आ गया. Now it's June 2010. पेपर है 2. It's 2-1. चलो ये क्वेश्चन आप लोग करो. आपके पास एक टेबल मैंने ग्रुप पे डाला था. द टेबल कंटेन प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस के टेबल में तुम जाकर टेबल से देखकर बता दो, या तुमने इफ यू हैव स्टार्टेड लर्निंग देम व्हिच इज ऑब्वियसली गुड, यू कैन टेल मी फ्रॉम योर मेमोरी. किलो को खुद उसने भर दिया है. नैनो 10 पावर कितना होता है? हाउ मच इज नैनो? 10 power ठीक है, गुड. minus 10 पावर 9 लिखूं वो तो फिर उसके साथ आएगा ना. जब वो -9 तो तब आएगा जब नैनो के साथ 1 कर दोगे. अभी तो सही है. अभी तो इट लुक्स फाइन दैट यू आर सेइंग 10 पावर -9 यहां पर, बिकॉज यू आर शोइंग इट इन द रिवर्स लाइन. What about centi? Centi has a symbol C. What about M? M is mega. Mega. Okay. And T is tera. T is tera. सर टेस्ट मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं, ये तो पहला टेस्ट है. आई हैव टू स्टार्ट ऑनलाइन. इवन मे बी आई विल पुट ऑनलाइन क्विज आल्सो टुमारो. टेस्ट के पोस्टपोन होने का तो कोई चांस नहीं है. मतलब ये तो इस तरह के टेस्ट तो मुझे ए लेवल में काफी जल्दी जल्दी टेस्ट लेने होते हैं, बिकॉज नहीं, मैंने कहा मुश्किल तो नहीं होगा. मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होगा? हाँ, नहीं डिफिकल्ट तो नहीं है. पहला टेस्ट है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत मुश्किल होगा. छोटा सा टेस्ट है, मतलब 4-5 MCQ और 2-3 थ्योरी क्वेश्चन. आई डोंट मुश्किल होना चाहिए. इवन दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग. मैं भी एक ऑनलाइन क्विज लेने का प्लान कर रहा हूँ कल, सो दैट पीपल गेट सम रिहर्सल. Two of the SI based quantities are mass and time. Two of the SI based quantities are mass and time. Total SI based quantities जो हमारे पास वो होती हैं 5. तो मास और टाइम तो उसने खुद ही उठा लिया. तो आप इसमें ले लो, आप एग्जामिनर को बोलो कि लेंथ रख ले, और टेम्परेचर वेरी गुड, करंट सही है, करंट, अगर किसी के पास वो जो करंट वाली फाइल, डिस्टेंस नहीं हो सकता. डिस्टेंस इज नॉट एन SI बेस्ड यूनिट. डिस्टेंस को लेंथ से कंपेयर कर लो ना. डिस्टेंस की जगह लेंथ लिखो, बेहतर है. वो दोनों होते एक ही हैं. ये है नवंबर 2010. द पीपल हु वांट्स टू मेक अ रिकॉर्ड, नवंबर 2010, पेपर है 21. Let's make it the last question for today. We have done good questions and many people gave a good response. He says the radius R. He says that a sphere of radius R is moving at a speed V through air of density rho. The resistive force acting on the sphere is given by this expression, where B and K are constants without units. He says B और K का कोई unit ही नहीं है. SI unit of F. तो F is the force
You must have learned its unit by now. It's kg ms minus 2. What about this rho? Today we have discussed it that rho has a kg m minus 3. What about v? Meter velocity is always in meter per second. The base unit to determine, use base unit to determine the value of k. So what is B? B, he says, B and K are constants without units. मतलब we'll use 1 in place of हाँ, these. you should ignore them. You can ignore them in the position where you find B. But what I'm looking here that he says use base unit to remind the value of K. चलो अब ये वाला पार्ट आज का आखिरी पार्ट है, वो तो अभी मैंने करके दिखाया ना। देखो मैंने अभी करके दिखाया कि ये कंपेयर हो जाते हैं। अगर आप कंपेयर कर लें तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करें, शाबाश। हमारे पास सबके बेस यूनिट्स हैं और बी और के आर कांस्टेंट्स विदाउट यूनिट्स। तो बी को इग्नोर कर दो, बी कोई रेशो है, और बाकी सारी यूनिट्स पुट कर दो। हाँ कर सकते हो ये। वी गॉट वन आंसर एज के इज इक्वल टू 2। Now I have replaced the units and I have ignored B, as he says the examiner. Now you have to help me out and see what I can cancel. Now I have 2 minus 3, that becomes minus 1. Now if I bring it up, it will become m square s minus 2. Then it will become ms minus 1 whole square. Here also it is ms minus 1. So the value of k will... many other people also got up to here. That's a good working. So that's all for today. And we keep it up to here for today. And I will try my best, inshallah, to put a class tomorrow also.
These extra classes are recorded. You can view them later also. The main idea should be there that base units are actually, whenever you talk about base units, this is the skill which is right now on the screen. This is the skill you have to improve. हाँ, copy कर लें. So the class is finished. If you want to leave, you can now leave. It's over. But if you are copying, you can copying and then you leave. Allah Hafiz. लास्ट स्टेप जो है कंपैरिजन है. लास्ट इफ आई राइट x पावर जाता है इन अ कॉन्सेप्ट और k2 हो जाता है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस. यस, इट्स 2. Allah Hafiz.